भारत वर्ष रे और राज्य रे भोट देबार परसेंटेज हारटा बढ़ी ता मीनिंग करुची लोक माने निर्वाचन रे अंश ग्रहण करने को चाहते दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स तांकर प्रतिनिधि को निर्वाचित करने पाए समाने उपयुक्त बना कर नंबर 2 इज responsible government. In democratic form of government, there is responsible government. You see in monarchical government, form of government, there is a movement against king. You see in military based government in Pakistan. In Pakistan military there is a movement. You see in dictatorship form of government, there is no justice. That is न्याय नहीं. You read in British rule in India, भारत में जो इंग्रज मान शासन करते ले, there is movement. But in democratic form of government, it is a responsible government. After general election, the majority party take oath and form the government. निर्वाचन परे साधारण निर्वाचन परे संख्या गरिष्ठ दल सरकार गठन करिया पई शपथ नियंती एवं सुजोग एवं सरकार गठन करती. So that to discuss the above matter, that is political aspect of democracy, the 2 points, one is representative government, number 2 is responsible government. In this point, in these 2 points, there is adult suffrage. साबालक भोट प्रथा 21 18 को आसीगला. There is political consciousness in the percentage हार बढ़ुची. Why? The percentage, yes, book and paper 2. The percentage increase, the voting percentage increase. Why? Active participation. There is political consciousness among the people. लोकमान को भितरे राजनैतिक सचेतनता सृष्टि होची बोली लोक अधिक भोट दउछन्ति बोली परसेंटेज बढ़ुची शतकड़ा. So that in democratic form of government, and the point is political aspect of the democracy, we find 2 points. One is responsible government, another is the people choose their representatives. Okay. Next point is it is also stand for equal political rights, liberties and opportunities. It is also equal. The citizens, the voters gave equal political rights, liberties and opportunities. It is social and economic application too. It is also considered as a way of life. What is democracy? Democracy is a way of life. हमर जीवन धारणर शैली भितर डेमोक्रेसी अच्छी. Number 2 point is
social democracy. Number 2 point is social democracy. Democracy is a social aspect implies equal status for men and women. Equal status for men and women. ସମାଜର ଦୁଇଟି ଅଂଶବିଶେଷ that is men and women. ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷ. So that democracy upholds the rights of men and women in society. ସାମାଜିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମାଜରେ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ. Abolition of all forms of discrimination, that is social democracy. सामाजिक गणतंत्र. Abolition of all kinds of discrimination, social discrimination. सामाजिक छुआ भेदभाव जोटा अच्छे डिस्क्रिमिनेशन ता ओडियाटा कौन एंड लाइक कास्टिज्म जातिवाद अनटचेबिलिटी छुआ अछुआ मनोभाव स्लावेरी राशिकल सेग्रेगेशन स्लावेरी दासत्व प्रथा राशिकल एग्रेगेशन वंशगत जो sorts of social evils एगुड़ा होती social evils. There is bad tradition and customs, conservative ideas, रक्षणशील तथ्य मनोभाव रक्षणशील मनोभाव ताको दूरे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. आस्ते आस्ते धीरे धीरे the peoples, both men and women, bring their rights from the government. ସେମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି and constitution also provides some fundamental rights to their citizens. संविधान प्रणत 7टी गोटे बाद जाइए 6टी फंडामेंटल राइट्स से उपभोग कर. There is no discrimination, casteism, untouchability, slavery, other discrimination, conservative idea in society. That is the point. The people's, the increase of एजुकेशन अमंग द पीपुल शिक्षा तांको भीतर पशि लोक माने परवर्ती काल रे आस्ते आस्ते शिक्षित होबाक बसिले. से दिन अंधार आजिर आलोक को आसी जाइछन्ति. शिक्षा तांको आलोक देइछि. Bad tradition and customs, religious matters, untouchability, casteism, ये जो सीमांतवादी प्रथा सामंतवादी प्रथा परंपरा आस्ते आस्ते समाज रो हटि जाउछि. It is only possible in democratic form of government and in
सोशल डेमोक्रेसी सामाजिक शासन व्यवस्था लोक माने शिक्षित होगा फल समाज रे थिबा बैड ट्रेडिशन एंड कस्टम्स दैट इज casteism, untouchability, you see the dowry structure, যৌতুক প্রথা এসব হটে গেছে। Nowadays, in modern times, the dowry system in society exists or totally abolished. Any question? Any answer, please? বর্তমান Exist. সমাজରେ যৌতুক প্রথা বঞ্চিছে না সমূলে ধ্বংস পাইছে? হ্যালো One ସମୂଳେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଇଛି। yes, clever and quick action and right answer ଅଛି ସାର୍ ନା ନାହିଁ? ଏହା ଟୋଟାଲି ଆବୋଲିଷ୍ଟ। ଦୁଇ ତିନିଟା କାରଣ। ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରଥା ଉଠି ଯାଉଛି। ଦୁଇ ନମ୍ବର କାରଣ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କଠୋର ଆଇନ ପାଇଁ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ଉଠି ଯାଉଛି। କଣ ଦଉଛନ୍ତି ଗିଫ୍ଟ ଟଙ୍କା ସେ ଅଲଗା କଥା। ଜଣେ କହୁଥିଲା ଯେମିତି ମୋ ପୁଅ ବାହାଘରକୁ ମୁଁ 2,60,000 ନେବି, ଗାଡି ନେବି, ଘୋଡ଼ା ନେବି, ଏସବୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲା, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଲା, ଏକ ନମ୍ବର କାରଣ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ସେଟଅପ୍, ଦୁଇ ନମ୍ବର କାରଣ ହେଲା ସରକାରଙ୍କର କଠୋର ଆଇନ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତିନି ନମ୍ବର କାରଣ ହେଲା ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଗଲେ ଲୋକମାନେ, ଚାରି ନମ୍ବର କାରଣ ହେଲା ବୋଥ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ ମାନେ ଝିଅ ଏବଂ ପୁଅ educated and they are in job. ଝିଅ ପୁଅ ଯିଏ ବାହା ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆମର ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜ, the male dominated society, ତାଙ୍କ ମତକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ଚାହିଁଲେଣି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୌତୁକ ଦବା ନବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଏବଂ we are highly educated and both of them in job sector. ସେମାନେ ସରକାରରେ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁକରି it is social aspect of democracy. ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। କୁସଂସ୍କାର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଏବେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କୁସଂସ୍କାର ସାମନ୍ତବାଦୀ ପ୍ରଥାରେ ଡେଭଲପ କରୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ଯୋଉ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା। ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଦରକାର, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥାଟା ଅଛି ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ କେତେକାଂଶରେ ଡେଭଲପ କରୁଛି।
Nowadays आमे दुई हमर दुई थिला एबे एक हे गलानी से झिया हो पुओ किसी सोशल ट्रेडिशन कस्टम्स ब्रेक हेलानी भांगी गलानी महिला माने घरु गोड़ काढु नथिले एबे बहुत समय जॉब सेक्टर रे एवं उच्च पद पदवी रे चाकरी करी निजर परिवार प्रतिपोषण कर सेतेबेले गोटे सिंगल सैलरी थिला इना डबल सैलरी स्वामी स्त्री दी जन चाकरी बोथ आर देम एम्प्लॉयड by the government, corporate sector or private sector. ତେଣୁକରି social political aspects of democracy it is changed बहु मात्रा रे एवं व्यापक भावे परिवर्तन होइछ यू सी दी फेमिनिज्म यदि सामाजिक क्षेत्र रे आमे कहिबा नारीवाद जेतबे यौतुकता थिला सेठी नारी केते एकांश रे अत्याचारित हेतिला एबे से अत्याचार कमी गलानी मो फेमिनिज्म जेतबे आसिला नारीवाद आसिला नारी सशस्त्रीकरण हेले नारी को रिजर्वेशन करा गला सोशल एस्पेक्ट पॉलिटिकल एस्पेक्ट रे मन को अत्याचार कमिला एवं in political aspect they cast their votes ସେମାନେ ବି ନିଜେ participate in election and cast their votes it also implies the adequate opportunity to all the people without any discrimination on the grounds of sex, caste, race, religion, faith and birth समझते हैं नारी पुरुष समझते डिस्क्रिमिनेशन नहीं जाति धर्म वर्ण लिंग निर्विशेष समस्त समान देयर इज रूल ऑफ लॉ इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ आईन शासन चलছে एनी डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं डेमोक्रेटिक सेटअप गणतांत्रिक शासन व्यवस्था क्रिएट ए मार्वेलस चेंज इन सोसाइटी सामाजिक व्यवस्था गोटे मार्वेलस परिवर्तन आनी गोटे रेवोल्यूशनरी चेंज वैप्लविक परिवर्तन दैट इज सोशल चेंज अगेंस्ट सोशल बैड ट्रेडिशन एंड कस्टम्स it is only possible in democratic form of government. Number 3 is economic aspect of democracy. अर्थनैतिक किंबा गणतंत्र रे गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे अर्थनैतिक दिग we cast our votes get political advantage and political rights but we have no economic rights according to Karl Marx
The society divided into two parts. One is have, another is have-nots. गोटे थिला वाला गोटे नथिला वाला तांको भीतर गोटे श्रेणी संघर्ष हुए क्लास वार होला पर दैट इज क्लासलेस सोसाइटी श्रेणीहीन समाज गठन किंतु ए कार्ल मार्क्स रो ए आइडिया ए उद्देश्य ए लक्ष्य वर्तमान सुधा समाज रे पहुंची पारी नाही द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इज द concomitant of political democracy. लोक अर्थनैतिक सुविधा सुजोग पाइबे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बिफोर 20 years 20 वर्ष पूर्वर कथा कहूँ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए पीपल who lived in urban area or rural area that is miserable गोटे व्यक्तिर से सहरांचल रहू बा शासन ग्रामांचल रहू सर अर्थनैतिक मेरुदंड दुर्बल थिला नाउडेज वर्तमान से देखा इन प्रेजेंट सिनेरियो वर्तमान दृश्यपटरे जदि आमे सेटा देखिबा वी आर ऑल इक्वल इन इकोनॉमिक aspect political wise our economic backbone अर्थनैतिक मेरुदंड बढ़ी the purchasing power of a citizen increased. The economic democracy implies the abolition of gross economic inequality and exploitation in society. शोषण विरुद्ध exploitation in society. समाज रे जो सामाजिक शोषण थाए सेटा बंद होइछि हमर क्रय परिवार शक्ति बढ़ी there is various aspects globalization enter into multinational corporation free trade the money easy money came to the pocket of the peoples टंका सहज लोक मान पॉकेट को आसी जाउछि ए दिगो को आमे जदि अनुसरण करिबा ताले इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पीपल्स इज साउंड गोटे स्थिर अवस्था रे पहुंचे इट स्टैंड्स फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड नेम इन income economic adequate economic opportunity for all the citizens economic adequate economic resource national resource distributed among the people जातीय संपत्ति जहाँ अच्छी लोक मान मध्य बंटा जा नेशनल रिसोर्स एंड economic opportunity adequate economic opportunities समस्त को समान अर्थनैतिक सुविधा सुजोग and assured to give minimum needs for life like food shelter clothing education and health care and assured करी democratic form of तुमको निश्चिंत कर शपथ नौची गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे तुम लाइफ पर जहार आवश्यकता अछि बेसिक मिनिमम नीड्स दैट इज फूड शेल्टर क्लॉथिंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर बेसिक निहाती आवश्यक फूड क्लॉथिंग प्राइमरी एजुकेशन हेल्थ केयर मुझे दैट इज इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी तीन व्यवस्था देखिले सोशल
aspect of democracy, political aspect of democracy, economic aspect of democracy. ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। So that democracy is also aspected by a way of life. A way of life, जीवन धारणर मान भितर गणतांत्रिक शासन व्यवस्था अच्छी। In everywhere we face the election. प्रति वर्ष आम गोटे निर्वाचन अंशग्रहण कर। That is maybe student election, cooperative election, MP election, MLA election, पंचायत समिति चेयरमैन इलेक्शन, जिला परिषद इलेक्शन, various elections. People develop their ideas in democratic way of life. ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଇଡିଆ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ परिवर्तन कर सारे। आगे जो पार्टिसिपेट परसेंटेज कमुला एवं बढ़ला, भोट हार बढ़ला, अधिक संख्यार नारी पुरुष महिला रिजर्वेशन पर से निर्वाचन को आसिले। बेसिकली एजुकेटेड पीपल पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, कंटेस्ट इन इलेक्शन। The scientific spirit of inequality, inquiry, respect of rule of law, faith in patriotism, discussion, constructive criticism is the democratic outcome. Constructive criticism. What is the role of opposition party? गोटे विरोध दलर काम कौन ना डेवलपमेंटल कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, उन्नतिकर विकासमूलक समालोचना से करिबो। विकासमूलक समालोचना, डेवलपमेंटल क्रिटिसिज्म। They suggest the government or ruling party to develop the various conditions, those points are demand of the people. जो कार्य गुड़िक लोक मानकर आवश्यक अच्छी, लोक मान निहाती आवश्यक से कार्य कर, से he pressurized the government fulfill the desires of the people. लोक मानकर इच्छा पूर्ण करने से सरकार ऊपर चाप पकाती एंड गठनमूलक समालोचना करती। What is the number one? What is the pressure by the people towards government? क्यों गोटे पॉइंट कहब सरकार ऊपर लोक मान चाप थाए सब बेले गोटे पॉइंट गोटे से पॉइंट कौन? एनीबडी एल्स प्लीज? मधुस्मिता गोटे गोटे कौन? रानुप्रिया, बबीता बेहरा, हेलो गोटे गोटे पॉइंट कहब जोटा कि लोक मानकर सरकार ऊपर चाप पड़ता है ये काम करने। एनीबडी एल्स?
सुमिता के सुरजित गोटे गोटे पॉइंट को सुबुची ठीक sir, अछि हाँ vote हेलो sir. हेलो Yes sir. हाँ गोटे पॉइंट Votes sir. ମାନେ ଲୋକ ଯଦି ଭୋଟ ଦେବେନି ସରକାର କେମିତି ଚଳିବ? नहीं नहीं से वोट गोटे पॉइंट देयर इज दरदम कमा लोक मानकर द प्रकृत आभिमुख्य दरदम कमा आउ किछि नहीं आप तो अलग पॉइंट गुड़े अच्छी किंतु सेमान मध्य मुख्य जे कंट्रोल्स दी प्राइस हाइक दरदाम जोटा वृद्धि होउछि सेटा नियंत्रण कर दैट इज द प्रिंसिपल डिमांड ऑफ द पीपल and a popular democratic government ଏହା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କାହା ଉପରେ ନା ଗୋଟିଏ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ଉପରେ ଯେ ଦରଦାମ କମା so the other views to tolerate upon the suggestion yes spirit of inquiry rule of law faith in principle of discussion constructive criticism ये अच्छी सब पॉइंट गठनमूलक समालोचना ये सब पॉइंट अच्छी किंतु मुख्य पॉइंट होची दरदम कमा the people who live in society as a citizen as a voter their primary demands on governments to control the price rise दर वृद्धि बा दरदाम वृद्धि की नियंत्रण कर लोक मानकर एटा प्रकृत तापर तो अच्छी विभिन्न अच्छी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रूल ऑफ लॉ ये सब अच्छी it is the prime demand of the people towards upon the government हमें देखिले there is various aspect of political life one is political aspect number 2 is economic aspect of the life number 3 is social aspect of life number 4 is democracy as a way of life now we have discussed about what is the merits of the democracy democracy ର ସୁଫଳ କଣ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କଣ one is democracy ର ଭଲ ଗୁଣ प्रत्येक अनुष्ठान व्यक्ति विशेष सरकार फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रो भल गुण अछि
डिक्टेटरशिप एकछत्रवाद शासन रो भी भल गुण अच्छी एकछत्रवाद शासन रो भल गुणटा कौन कहि परिबो कि हेलो एनीबॉडी एल्स प्लीज गुड मेरिट्स ऑफ द डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एकछत्रवाद शासन रो गोटे भल गुण दैट इज क्विक डिसीजन क्विक डिसीजन एकदम माने खूब कम समय भीतर निष्पत्ति क्विक डिसीजन so that the merits of democracy, that is the ideals of democracy, has been widely accepted by the modern world. एकदम बहुल भाव आधुनिक समाज रे बा शासन व्यवस्था रे याकू ग्रहण कर डेमोक्रेसी इज नाउ aspected the best form of government याकू समझते बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे ग्रहण कर इट इज कंसिडर्ड द बेस्ट mechanism for protecting the defending the people's right and liberty people the fundamental rights liberty को प्रोटेक्ट करुची डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लोक मैंने कर जो फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार लिबर्टी समानतार अधिकार स्वाधीनतार अधिकार ताको प्रोटेक्शन दउची democratic form of government. It is based on rational principle and gives the recognition to the worth of importance of the people. Importance दउची लोक माने भोट र मूल्य दउची worth of a vote भोट र मूल्य दउची लोकन को importance दउची लोकन को importance दउची माने लोकन कर जो मनोभाव लोकन कर जो थॉट लोकन कर जो डिमांड ताको फुलफिल कर we may various points. The merits of the democracy, there is various points. Number one is people's government. It is a government by the people. That is people's government. Lokomanekar Sarkar. You see the definition of the Abraham Lincoln. Of the people, for the people, and by the people. लोकमानकर लोकमानक पाई लोकमानक द्वारा so that it is a government that is people's government लोकमानकर सरकार Democracy is regarded as the best form of government because it is only government which is recognized by the people's power. सरकार किमिति असला क्षमता by the people's power. It is recognized. सरकार किमिति recognize पाइला by the people's power. People's power कहते बारे during the period of election they gave their vote by EVM. Electronic voting machine द्वारा से माने जो क्षमता पाई पीपुल्स पावर जोटा कह दे फॉर्म ए न्यू गवर्नमेंट चेंज द गवर्नमेंट the government gets all the power from people and exercise the power in such way as people's decide सरकार द्वारा ए लोक मान द्वारा क्षमता को आसिले एवं लोक मान जो डिमांड से माने पूर्ण करने बद्ध परिकर दे
They decide, they frame the law. That is the demand of the people. That is the demand of the people or people's voice. It ensures the people to participation and government act according to the people's will. ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, people's will, ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ନେଇ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। And democracy gives the knowledge to public opinion in a democratic state. Voice of the people is regarded the voice of the God. Voice of the people is regarded the voice of the God. And the people create public opinion to pressurize the government. गोटे जनमत सृष्टि करे सरकार को पाए। गोटे पॉपुलर सोवरेनिटी लोक मान पाखे अच्छी। So that number one point is people's government. Number two is principles of equality. Samanata. Samanata, principles of equality. The people in democratic form of government, the democracy uphold the principle of equality. पूरा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूरा इक्वालिटी की ही समर्थन कर। इन ए डेमोक्रेटिक no special rights or grant to any class or group, special grant is any class or group, because or any religion also, because India is a secular state. There is no special privilege to any caste, any religion. There is no special privilege. The people in democratic form of government get equal rights, equal participation, and equal status to fulfill their demand, liberty, and perform their fundamental duties. That is the key tone of the popular democratic form of government. The people uphold the fundamental rights by the government and fulfill their desires in society, and they create their internal knowledge in society. समाज रे बा सामाजिक व्यवस्था रे जड़े नागरिक तार अंतर्निहित शक्तिर विकास करिथे। Equality is said to be foundation stone of democracy. Foundation stone. Stone that founds in democracy. निर्माण दिन पत्थर गणतांत्रिक शासन व्यवस्था निर्माण दिन पत्थर होची इक्वालिटी, समानता। इक्वल, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। देयर इज रूल ऑफ लॉ। जाति धर्म वर्ण लिंग निर्विशेष समस्त समान आईन शासन चले।
And democratic guarantees the social, economic, and political and legal quality to everybody. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲ ଶବ୍ଦଟା ଆମେ ପାଉଛେ ଦେଖୁଛେ guarantees democracy guarantees social, economic, political and legal equality to everyone. प्रत्येक लोगों को social, political, economic and legal aspect रो guarantee दଉଛି. Number 3 point, that is safeguard of individual liberty and rights. Safeguard of individual liberty and rights. संविधान हमको किए देछि कौन देछि 6टी फंडामेंटल राइट्स देछि मोर 6टा फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करूछि किए दैट इज गवर्नमेंट सरकार से सरकार को फॉर्म रे अछि ना डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स एक डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे नहीं एक छत्रवाद शासन ने नहीं राजतंत्र शासन ने नहीं there is no fundamental rights in economic development. Various aspects the democracy grants and protects the rights and liberties of the people. Grants ମୁଁ କହିଲି ଦିଏ fundamental rights ଦେଇଛି ଏବଂ protect करे rights and liberties of the people. All the people enjoy equal rights, liberty in democratic without any discrimination. समान सुविधा सुयोग पाइबो बिना डिस्क्रिमिनेशन पाइबो. All the basic freedoms like freedom of speech, expression, freedom of criticism, freedom form of association are provided in democracy. Democracy रे provide कराउ freedom of speech, association, कथा कहबार स्वाधीनता रखी कि हमको दे safeguard of individual liberty and equality in democratic form of country. Democracy also grants any fundamental rights to the people which are prescribed by the judiciary. Judiciary system रे जेति fundamental rights हमको दबा कथा सरकार हमको दे short दे. Why? The government provides 6 fundamental rights to their people. Answer. To develop their inner quality, inner knowledge in society. व्यक्तिर अंतर्निहित शक्तिर विकास पाए अंतर्निहित ज्ञानर विकास पाए समाज रे सुस्थ रे रहिबा पाए that is the safeguard of individual liberty and rights. Democracy also grants the fundamental rights to the people which are protected by the judiciary. In these points or these discussions, now you learn from this topic a democratic form of government is the best form of government running successfully in India. Any question, please? Any question?
हेलो कौन वर्तमान सुधा प्रश्न नो सर। कह गोटे इंटराक्शन कह मु तुमको कहबी तुम गोटे क्वेश्चन कर तुम उत्तर देवी तुम गोटे ग्रुप डिस्कशन कर रूपाली गोटे क्वेश्चन कह डेमोक्रेटिक सिस्टम फेल्युअर इन इंडिया भारत वर्ष रे गणतांत्रिक सरकार भुसुड़ी पड़िथिला केउ वर्ष एवं सेतबेले सरकार रे किए थिले इंदिरा गांधी गवर्नमेंट टाइम रे सर, इमरजेंसी टाइम जोटा केउ डार्केस्ट वर्ष आवर 1971 ना सर, 71 नो 75 सॉरी 75। 1975 मसीह इंदिरा गांधी थिला प्रधानमंत्री से गोटे फास्ट टाइम से गोटे इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा करथिले घोषणा कले लोक मानकर जो फंडामेंटल राइट्स लगे फंडामेंटल राइट्स टाकू से उड्र करने से लोक मानकर कंठरोध करथिला ठीक अछि यादव अच्छा there is a movement there is a mass movement not movement there is a mass movement against Indira Gandhi or Congress government various political leaders in that time create a mass rally against government but they are arrested by the government machinery सरकार शासन कल द्वारा से माने अरेस्ट हेले 1975 मसीह सरकारटा होता है कि तेरे आमर फंडामेंटल राइट्स को हैंग कर दिया जाइतिला then the leader of the Bihar Jayprakash Narayan gave a slogan that is total revolution संपूर्ण विप्लव आरंभ कर देथिला अनेक कथा so the democracy grants many fundamental rights to the peoples which are protected by the judiciary हमको देजी संविधान सतटी मौलिक अधिकार जो मौलिक अधिकार को प्रोटेक्टेड बाय दी जुडिशियरी डिपार्टमेंट विचार विभाग ताकू नागरिक मान को तार प्रोटेक्शन नेक्स्ट नंबर इज नंबर 4 रेस्पॉन्सिबल एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल दायित्वशील सरकार एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट गोटे गुड गवर्नमेंट गोटे दक्ष सरकार दायित्वशील और दक्ष सरकार कौन हम ना स्पीडी रन द मशीन खूब स्पीडी द्रुत गति सरकार परिचालन दायित्व थिबा दरकार पॉइंट इज responsible government and efficient government democracy is a responsible and efficient government
In democracy, the rulers remain with the restriction from all directions. They are accountable to the legislature for their information and communication. They are responsible for their information and accountable to the legislature. The rulers are responsible to the people. People exercise their control over the government either through the criticism or through the public opinion. Government ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ଓପିନିଅନ ଜନମତ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥାଏ. So that efficient government, faithful government, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସରକାର ଶାସନ କରିବା ଉଚିତ. The chief object of the responsible government or democratic form of government to make good work for the people. In those votes they are elected. जो मन को vote रे हमें निर्वाचित होई. Thank you. ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଦରକାର. The ruler also responsible to the people. People exercise their control over the government and their criticism through the public opinion. Public opinion make the ruler extremely efficient and responsible. Public opinion. Janamata. The public opinion creates political consciousness among the peoples. राजनैतिक चेतना सृष्टि करे. राजनैतिक चेतना सृष्टि करे. लोक माने भोटर्स माने गोटे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट गोटे दायित्वशील सरकार को इलेक्ट करते बा निर्वाचित. According to some philosophers, the pen is the mightier than sword. Yes, Nalin Patra. Pen is the mightier than sword. माने खंडाठू कलम रो मुन्न बहुत बलशाली. So that the vote of the people making a responsible government गोटे सुस्थ गणतांत्रिक सरकार सृष्टि करे. इन इलेक्शन निर्वाचन रे the public opinion, that is printing media, electronics media, debate, competition, functions in schools, colleges. They give message to the society. समाज को गोटे बार्ता जाए. से बार्ता को समस्त मानते. Sir Carl Lewis said politics is nothing but communication. Yes, yes. It is political consciousness कही पारो, political education भी कही पारो, राजनीतिक शिक्षा लोक मान मध्य in various levels कही जोटा political level, social level, economic level, अर्थनैतिक स्तर रे विभिन्न प्रकार क्रिटिसिज्म निर्वाचन वेरियस पब्लिक ओपिनियन देखिबो सोशल मीडिया से निर्वाचन प्रचार कर. इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, पेपर मीडिया, प्रिंट मीडिया, वेरियस मीटिंग्स,
workshops, political consciousness, debate, एमन सब पब्लिक ओपिनियन सृष्टि करे। Gardner has rightly said, popular election, a popular control and popular responsibility are more likely to ensure the degree of efficiency of democracy than any form of government. ये कौन सरकार? प्रोफेसर गार्नर, a political philosopher. He said that. मैं any political organization बा सरकार गठन करी, किंतु मुख्य कथा है to fulfill the desires of the people. ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା, ଏଇଟା କୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଫର୍ମ। କେବଳ ମାତ୍ର ହିଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରରେ ବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ। It is the responsible of the local government, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार काम। Next number is based on rule of law. Based, B-A-S-E-D, based on rule of law. Democratic form of government based on rule of law. गणतांत्रिक सरकार आईन शासन उपरे पर्यवेसित। Democracy is based on the principle of rule of law. In the democratic state, no man is treated as above the law. Nobody treated आईन उद्धर के नाम. All are equal before. And everybody is treated as the equal in the age of law. आईन दृष्टि से समस्त. There is rule of law. Law in the democracy not arbitrary commands of the nobody, rather than the reflection of social custom and tradition. Reflection of social customs and traditions. That is rule of law. आईन दृष्टि रे गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे समस्त समान. Next number is less chance of revolution. You see, in democratic form of government, there is no revolution. You see, in monarchical form of government, there is revolution against king. Raja विरुद्ध आंदोलन, विप्लव. You see, in dictatorship form of government, सेठी भी एकछत्रवाद शासन विरुद्ध आंदोलन. You see, the British rule in India, इंग्रेज सरकार का विरुद्ध में मतलब फ्रीडम मूवमेंट. But in democratic form of government, गणतांत्रिक शासन व्यवस्था, there is by discussion the mutual deliberations, by regulations, but the legal constitutional means uphold the periodic elections, democratic basis of a fight with a ballot box, not in bullets. Democratic form of government, one thing is based on periodic elections. जो टर्म एंड कंडीशन अच्छे टेन्यूअर अच्छे कार्यकाल तार भितर से भोट धारण करते.
Number 2 is democratic setup, गणतांत्रिक व्यवस्था. हे 3 ballot, not in bullet. गणतांत्रिक प्रक्रिया बा लोकप्रिय गणतांत्रिक सरकार सरकार को बेस कर चलता. So that democratic battle in fought with bullet, with ballot, but not with bullet. Democratic गणतांत्रिक शासन व्यवस्था, but in ballot, not in bullet. Another point is that is promote self-reliance. No. Promote. Hello. Anybody else? Please question. Promote self-reliance. Democracy gives the due recognition to the worth of the people. ଲୋକମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଥାଏ, worth of the people. It also develop the qualities of the people. It makes them self-reliant and progressive. The right to vote giving dignity of the individual and create self-realization in the sense of prestige of the individual. Self of the prestige. That is promotes the reliance. Self prestige. पढ़ुली पूर्व पॉइंट रे भोट रो हार, भोट दबार हार बढ़ी ना कमी? हेलो. बॉडी बढ़ी बढ़ी कहीं बढ़ी? कॉन्शियसनेस सर, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस. Political consciousness among the people, political education among the people. है शिक्षा गोटे अच्छी, चेतना गोटे अच्छी. ये शिक्षा एवं चेतना को किए लोक पाख को आणुची? मीडिया सर, हाँ, मीडिया इलेक्ट्रॉनिक हो बा माने टेक्स्ट. ये मीडियम टा किए? दैट इज पब्लिक ओपिनियन. नंबर 1. नंबर 2 इज दैट इज गवर्नमेंट. हमें गवर्नमेंट के ना गवर्नमेंट कहूँ गणतंत्र महापर्व रे सामिल हो, तुम इच्छा मुताबक भोट दियो. डोर टू डोर सेलिब्रिटी माने एडवर्टाइजमेंट कले आम भोट देलु, ठीक अच्छे. आ गोटे हूँ क्रिएशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, गोटे जनमत सृष्टि करुच्ची. दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया. आम समस्त बोधे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर निर्भर कर, सोशल मीडिया पर निर्भर कर, प्रिंट मीडिया पर निर्भर कर. ये 3टा है गोटे मीडिया. ये मीडिया व्यापक भाव प्रचार हो, लोक मान को भोट दियो, भल लोक को भोट दियो, सेलिब्रिटी मान प्रचार कर. या व्यतीत देयर इज वर्कशॉप, देयर इज कर्मी सम्मेलन, देयर इज डिबेट, देयर इज डिस्कशन, देयर इज डिस्कशन ऑन इलेक्शन मैनिफेस्टो ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज. विभिन्न राजनीतिक दल निर्वाचन इतिहास पढ़ा, पर्यालोचना करवा. Which party is best? किए आमको दब लार्ज स्केल इंडस्ट्री, किए आमको दब जॉब सिक्योरिटी, किए आमको दब जीवन धारण मान परिवर्तन करने, किए आमको देची जीवन धारण में बंचिया मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, फ्री ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन. 3टा जिते आसी लोक पाखे पैसा आई, लोक मैंने विभिन्न काम कर.
so that public opinion create a vital role. यदि पब्लिक ओपिनियन गोटे सृष्टि करिवो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया सोशल मीडिया रे गोटे दल को भी जीते जाई पारिबो। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड पॉलिटिकल एजुकेशन जोटा हमें पढ़ुथिले provides political education, political consciousness among the people. राजनैतिक शिक्षा लोक मान को दिए provides. Those who are voters, those who are citizens, those who are cast their vote in election procedure, निर्वाचन प्रक्रिया रे जो माने अंश ग्रहण करन. That is. And democracy has a great educative value. तार गोटे बहुमूल्य अछि. It provides political education and training to the citizen. Political education and training तालीम दे. To create political consciousness among the people. लोक मान के मध्य राजनैतिक चेतना सृष्टि करे. हमें भोट दबा, हम दल को भोट दबा, यही राजनैतिक दल को भोट दबा. Political consciousness. It helps the public become the human beings as well as good citizen. गोटे सुंदर नागरिक पाई, गोटे सुस्थ वातावरण आनिबा पाई, गोटे सुस्थ डेवलपमेंटल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म करिया पाई. भोट दान एक अग्रणी भूमिका निर्वहन करे. That's why the people cast their votes with courageous mood. माने आग्रह सहित से निर्वाचन रे भोट दान करता है. All government has a method of education, but the best education is self-education. Therefore, the best government is self-government, which is democracy. Self-education. निजे सचेतन हब. राजनैतिक फिलोसफी दर्शन उद्बुद्ध हम. नेक्स्ट नंबर इज best guarants against arbitrariness. Arbitrary एक छत्रवादी शासन विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन कर. एक छत्रवाद ध्वंस स्तूप उपरे गणतांत्रिक शासन व्यवस्था पर्यवेसित. एक छत्रवाद को कबर दे गणतांत्रिक शासन व्यवस्था उठी. हिटलर, नाजी, मुसोलिन इन सब एक छत्रवाद. हेलो हाँ सर नमस्कार. नमस्ते. सर टिके साउंड टा सुबह जाउने सेटा मोर प्रॉब्लम ना कोड प्रॉब्लम टी जानि परने. कोटे माने साउंड सर आपन वॉइस टा सुबह जाउने. बुझी पालिन क्वेश्चन टा. सर जहा पढो नदी वॉइस टा किछि मते सुबह जाउने. मु तो वर्तमान सुबह जाउची ना नहीं. से कम पूरा कान पाखरे आनी सुबह जाउची. कहीं कम सुबुची. तुमर वॉइस टा मत तो ठीक सुबह जाउची. मो वॉइस टा ठीक सुबह जीवा कथा. तमरो किछि ये सर आपन को वॉइस सुबुजी से भयंकर कोन प्रॉब्लम अछि. हाँ कौन थिबो केने मो वॉइस टा तो बहुत मु क्लैरिटी नहीं कथा होची. धीरे कथा होची, आस्ते आस्ते पढ़ौची. आउ हबा कथा ठीक अछि. देखिबा कोन दूरे होची, देखिबा कोन करी हम. ठीक अछि सर. नहीं मो काय कथा होची तुमे माने सुनुच एनी क्वेश्चन तो सब पॉइंट रा क्वेश्चन
विभिन्न उदाहरण देकिनी आम गोटे आलोचना करुचे। इट इज ए वन काइंड ऑफ ग्रुप डिस्कशन। तेणुक ग्रुप अर्थात जी पिला बर्तमान एक्जिस्टिंग क्लास रे अच्छ गोटे गोटे क्वेश्चन को एनी क्वेश्चन प्लीज मुझे तो कहूँ घंटाए पढ़ेला नॉन स्टॉप ता भितर टिके क्वेश्चन आवर रखिले टिके बोथ ऑफ देम तुम्हें एवं मु शिक्षक एवं छात्र छात्री माने रिलैक्स है कि बुझे। गवर्नमेंट फेल्युअर केते बेले हुए कहलो? गवर्नमेंट फेल्युअर केते बेले माने सरकार निर्वाचन हारी जाए कहीं हारी जाए बा फेल्युअर है कहीं unable to satisfy people demand। चारि पांचटा रीजन रे को नंबर 1 लोगों को ये माने डिमांड सैटिस्फाई करि पारेनी। डिमांड देखो लोकंकर डिमांड हो असीम। ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड अनलिमिटेड। लोकंकर तमर वांटा कौन सीमित कि तुम निजे को तमर माने अभावटा सीमित इकोनॉमिक्स रे अछि। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तुम आज जड़े साइकेल चलाउछ काली कह मु मोटरसाइकेल चलेबी काली कह मु गोटे भल कार टे किनिबी काली कह मु आउ ट्रेन 3 टायर एसी रे जीविनी बर्तन फ्लाइट रे जीवी माने ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तेणु से निर्वाचन रे लोक मान को सबु प्रकार क्षमता दे हेबनी। सबु प्रकार जदि क्षमता को तार फुलफिल करिवो डिजायर्स को ताले बाध्य होइकिन मिथ्या प्रतिश्रुति दबो। बाय दी false promise the political leaders came to the power। बहुत गुड़े मिथ्या प्रतिश्रुति दे राजनीतिक दल निर्वाचन जीतिकिनी आसता। तेणुक गोटे दल क्षमतार हटिଯିव कौन से कारण गोटे इलेक्शन मैनिफेस्टोटा को ठीक रूपे प्रचलन करिपारिबो ना। नंबर 2 भारत वर्ष में women create a key role to elect the leaders। भारत वर्ष में महिला मान हाथ में चाबिकाठी अच्छी भोटर चाबिकाठी से माने नेता को जीते आगे 10 वर्ष पर पूर्व गोटे फेमिनिज्म पूर्व नारीवाद पूर्व स्वामी ता स्त्री कहला जीवु यही घंटा चिन्ह रे भोट दे पड़े कि नारी माने भोट देवाई जाऊ नथिले। परसेंटेज कम थिला एबे समस्ते गरे एबे नारी ता एसएस ता स्वामी उप कहिथिबा कथा रे भोट दउची कि हाँ कि ना को नो सर नो कहीं ता भीतर गोटे राजनीतिक सचेतनता आसी से झील ता जो झीलटी भोट देवाई जाऊँगी पुओटी देवाई जाऊँगी भीतर भी गोटे सचेतनता अच्छी दे कास्ट देयर भोट सिक्रेटली इन ईवीएम ना मु घंटा चिन्ह रे भोट देविनी मु अलगा चिन्ह रे भोट देवी बिकॉज द सिंबल ऑफ watch in failure it is a corrupt government not satisfy the desires of the fulfill it gave a false promise to citizens से लोक मान को मिथ्या प्रतिश्रुति so we choose another political party another leaders अन्य गोटे राजनीतिक दल को आम निर्वाचित कर दैट इज द पॉइंट।
promotes the national character. জাতীয় চরিত্র, আমরা জাতীয় চরিত্র, we love India. We created national patriotism. জাতীয় দেশাত্মবোধ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁ. We create integration, national integration. ଜାତୀୟ ସଂହତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ମୁଁ ଜାତି ବଡ଼. So the democracy form of government creates or promotes national character. Democracy stimulates people's interests in public affairs and strengthen their loyalty to the trust in government. Loyalty देखा, trust in government. तुम्हें जो गवर्नमेंट को ऊपर वोट देते तापर विश्वास करो, धैर्य धर, टॉलरेंस. You keep tolerance upon the government. सहनशीलता रक्षा करिए. Strengthen to love of country and includes the more vigor and zeal in the minds of the people. Jigar, patriotic. Next point is best guarantee against arbitrage. Authority government. सर ये पॉइंट आमे क्लियर करथिले. कोटा कोटा ए पॉइंट पढ़िथिले सर आमे आर्बिट्ररी गवर्नमेंट. बेस्ट guarantees against arbitrariness. ये जो बेस्ट गवर्नमेंट, arbitrariness, monarchical form of government, dictatorship of government, British rule in यांक विरुद्ध रे गोटे सरकार गठन. Last but not least, democracy is a best guarantee against the despotic rule, against the dictatorship form of rule. एकछत्रवाद शासन विरुद्ध. ମୁଁ बेले बेले कहे एकछत्रवाद मृत्यु पर ता ऊपर छिड़ा हुए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. The peoples through the dictatorship form of government to Bay of Bengal by EVM. EVM द्वारा लोक माने भोटर माने एकछत्रवाद शासन को बंगोपसागर फपाड़ी दियंती. That is the strength. That is the voice of the people. से यह होची कोन ना लोक माने कर बळ. यह होची कोन ना लोक माने कर स्ट्रेंथ, शक्ति. डिमेरिट्स देखिबा. Democracy is accepted as the best form of government. Still, there are many demerits and shortcomings. Aristotle called the perfected the form of the polity. Tolerance called in aristocracy of blackguards. Number one is emphasis on quality. गुण को emphasis on quality. Quality गुण को emphasis करे, समर्थन करे. जो माने भोट देना कम संख्या रे विरोधी दल आसन रे बसन ताकू कौन करे, ताकू नेग्लेक्ट करे. डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नंबर 2, amateur rule. Number 3, expensive. विराट
जनसंख्या पूर्ण सरकार गुड़ा डेमोक्रेटिक हिमालय टू कुमारिका पर्यंत बहुत बड़ सरकार लोक संख्या विशिष्ट इट इज टू एक्सपेंसिव इन पीरियडिक इलेक्शन देयर इज बाय इलेक्शन सरकार भांगला बाय इलेक्शन हम देयर इज टू एक्सपेंसिव huge amount of public money spent on salary and allowances in the time of election. बहुत टंका खर्च too expensive. Next is incompetent government. Incompetent government, दायित्वहीन सरकार. Demerits of the democratic form of government. So moving, देखेवार प्रकृति. Democracy is a so moving government. It is very prone to in decision, fairness and responsibility. A democratic process involves the discussion of the various leaders. It proved the weak times of the war and emergency. ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ହୁଏ ଆସେମ୍ବଲି ଡକା ହବ ବିଧାନସଭା ଡକା ହବ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବସିବ କ୍ୟାବିନେଟ ବସିବ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଇଟ୍ ଇଜ୍ in very difficult during the period of election, emergency and war. ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ ନଥାଏ. Next, evils of party politics. Party politics रे मध्य बहुत विशृंखला देखा जाता है. Growth of regionalism. The democratic form of government national party थाए से विभिन्न स्टेट को नेग्लेक्ट करी थाए तेणु करी ग्रोथ ऑफ रिजनलिज्म बा आंचलिकतावाद सृष्टि करी थाए एवं एई आंचलिकतावाद रो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी सृष्टि आंचलिक राजनैतिक दल सृष्टि. योर ब्राइट एग्जांपल in Odisha a regional political party that is Biju Janata Dal. In West Bengal there is Trinamool Congress. The various regional political parties in various states of India. भारतवर्षर विभिन्न राज्य रे अनेक गुड़े regional political party अच्छे एवं they are many times came to the power and form the government. You see in Delhi there is Arvind Agrawal government. Arvind Agrawal became the chief minister in Delhi. In last election, his party defeated Aam Aadmi Party, and he also defeated in 7,000 or something votes from his rivalry BJP candidate. Last निर्वाचन रे चलित निर्वाचन रे अरविंद अग्रवाल अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी निर्वाचन हारी जाइए निजे हारी
spread of corruption. Spread of corruption. It is dunniti. Democracy must protect the nepotism and favoritism. And spread of corruption in the government officials. Tyranny of majority. जेତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ मेजोरिटी अच्छु हम मान भीतर गोटे हिंसा भाव सृष्टि टायरेनी ऑफ मेजोरिटी डेमोक्रेटिक रूल ऑफ्टन द रिजल्ट ऑफ despotism and tyranny majority irresponsible of rule दायित्वहीन सरकार एला demerits हमें पढ़िले merits and demerits of the popular form of government, that is democracy. Now we discuss about the conditions for successful run of democracy in India. Successful run of democracy in India. भारत वर्ष रे किमिति गणतांत्रिक शासन व्यवस्था सफल रूपाय नहीं परिबो ता ऊपर आलोकपात करिबा. नंबर 1 इज डिजायर फॉर डेमोक्रेसी. हमर आवश्यकता डेमोक्रेसी को सेटा को आलोचना करिबा. Modern age, it is an age of democracy. It is majority countries of the world. Democratic form of government exists. Democracy is regarded as the best form of government. Modern world होची आधुनिक जुगटा होची गणतांत्रिक जुग. विभिन्न राज्य रे भी अछि विभिन्न देश रे भी अछि भारत वर्षर. In the some countries of UK, USA, Australia, New Zealand, it is democracy is working successfully. In some other countries, ठीक है, Latin America. Number 1, desire of democracy. हमार आवश्यकता डेमोक्रेसी पर अछि. The first and foremost condition in the people trust have their democracy, desire for democracy. There is basic faith in the fundamental principle of democracy. Fundamental principle, मौलिक धारणा डेमोक्रेसी ऊपर रहबा उचित. ट्रस्ट करिवे, विश्वास को नेबा उचित. डेमोक्रेसी. Number 2, enlightened the citizenship. नागरिकता को बहुल भाव में प्रभावित करी. हमर नागरिकता केते थिले ना 21 18 को पड़े आसला. बहुत नुआ वोटर्स choice the democratic form of government. They participate in democratic form of government. They elect their leaders. They appreciate the electronic voting machine. Only in now the time is depend the all are in technically highly developed. जेहेतु आम वैषयिक कला उन्नत शिखर पहुंचीचु तेणु आमको ईवीएम ही आवश्यक. कास्ट आवर वोट इन ईवीएम वोटिंग machine. Whispered of education. Education रो व्यापक व्यवहार हवा उचित. खाली कहती जे आम सिंबल कहीं भोट दो. आम सिंबल एई भोट दो वी आर इलिटरेट. आम चिन्ह रे भोट दो कहीं ना पाठ पढ़ी पारनु का ना लेखा पढ़ी पारनु. तेणुक आम चिन्ह रे भोट दौचु. हाथी घोड़ा बरगछ कलम
इत्यादि इत्यादि तेणुकरी जो आम भितर शिक्षित हे राजनीतिक शिक्षा दिज्व पॉलिटिकल एजुकेशन जिते बड़े हम से आम गणतंत्र प्रकृत मूल्य बुझीपर द बेस्ट ट्रू वैल्यू ऑफ एजुकेशन ट्रू वैल्यू ऑफ एजुकेशन मूल्य बुझीपारे सक्सेसफुल ऑफ डेमोक्रेसी आम से अनुभव करवा दैट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी गणतंत्र प्रकृत मूल्य आम ही बुझ दैट इज द पॉइंट इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी अर्थनैतिक एवं सामाजिक निरापत्ता डेमोक्रेटिक जदि आम थी आम डेमोक्रेटिक ठीक रे सफल रूपायन कर कंस्ट्रक्टिव पब्लिक ओपिनियन माने गठनमूलक जनमत सृष्टि हेले आम गणतंत्र को सठिक रूपायन कर नेक्स्ट इज रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन दायित्वशील विरोधी दल रहा उचित सुस्थ वातावरण सृष्टि करने कथा एंड कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन हवा कथा बा गठनमूलक समालोचना दवा कथा क्रिटिसिज्म ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी साधुता एवं जातीय सहमति इंटीग्रिटी रहा उचित सक्सेसफुल ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी द डिमांड्स द हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी अमंग द पीपल लोक भितर दुईटा गुण रहा उचित पीपल शुड possess a high degree of political reliance, consciousness, and participate in public affairs. लोक मानकर कौन आवश्यकता भितर पार्टिसिपेट करवा अंशग्रहण करवा एबल टू रेस्पॉन्सिबल लीडरशिप गोटे लीडरशिप भी नेतृत्व सृष्टि करवा स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस जीरो टॉलरेंस सहनशीलता हवा उचित गुड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स भल शिक्षानुष्ठान भित्तिभूमि प्रतिष्ठा हवा उचित होटली क्रिएट पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल केवल पॉलिटिकल ओपिनियन इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया रे हबनी इंस्टीट्यूशन हम इंस्टीट्यूशन कौन हम गोटे डिबेट कंपिटिशन तार मेसेजटा कौन पब्लिक ओपिनियन कौन सभा समिति रे कौन लोकंर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस कौन सबको मिसेक गोटे पब्लिक ओपिनियन कॉलेज स्कूल रे डिबेट कंपिटिशन हम डिबेट कंपिटिशन व्हाट इज द मेसेज गोज टू सोसाइटी मेसेजटा सोसाइटी की कौन गला वेदर इट इज राइट और रॉन्ग ये ठीक अच्छी ना भूल अच्छी ये हूँ भारत वर्षर सक्सेसफुल रन ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया चैलेंजेस टू डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन इंडिया सेटा तो पढ़ा that is to the point that is one is illiteracy number one is inequality ये सब जो चैलेंज अच्छी इनइक्वालिटी आम मान भितर इनइक्वालिटी असमानता अच्छी इलिटरेसी जो अशिक्षा अच्छी जोटा कि आम चैलेंज दे पारनु डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गोटे हूँ रिजनलिज्म
आंचलिकता मनोभाव जोटा मु कहली नेशनल पार्टी को आम विरोध कर जातीय दल को आम वी क्रिएट regional political party we create a regionalism in the state गोटे आंचलिकता मतवाद आम सृष्टि कर नंबर नेक्स्ट नंबर इज नक्सलाइट प्रॉब्लम नक्सलवाद समस्या भारत वर्ष रे अछि सक्सेसफुल रन ऑफ डेमोक्रेसी किमिति डेमोक्रेसी की ये माने ठीक रूपे आगे देउ नाहंती विभिन्न बैरियर सृष्टि करछंती इत्यादि जेंडर इनइक्वालिटी भारत वर्ष रे अछि एंड besides the demographic problems gender discrimination is very in political and economic sector gender problem हमारा political जोटा कि लिंगगत समस्या से गुड़ा females are discriminated in the respective of both employment and their representation in public life. महिला माने निर्वाचन रे अंशग्रहण करने को बहुत कम दिया एवं एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र भी सेमानकर अंश बहुत कम अच्छे किंतु लोकप्रिय गवर्नमेंट सेमानक पाई 33% रिजर्वेशन संरक्षण करके महिला का पाई they participate in election and they are now highly educated they are in various posts of the government and central government they occupy their prestige place in society समाज भी स्थान निरूपण कर सारे they are also hardworking and no doubt their integrity is for the better performance of the government integrity ba sahanti better performance in government सरकार को बहुत performance रहुची and they also create the political consciousness among the people by participating in election and create sympathetically votes during the period of election महिला माने मध्य बहुत सचेतन हेले भोट रे से माने सिंपैथिकली ओडिया देखो हेलो सिंपैथी भोट अनुकंपा भोट से माने मध्य they are in better position in the administration in states and central government like माननीय प्रभाती परिडा became the deputy chief minister in Odisha government and chief and speaker माननीय Suruma Padi became the Speaker of the Odisha State Legislative Assembly. Okay, they create their position
इन सोसाइटी सेमान मध्य समाज रे बा राजनीति रे सेमान को स्थान बजाय रखछंती एंड आल्सो इन a democratic setup the women create a vital role कहते महिला माने मध्य therefore due to gender based discrimination women folk have been decided to denied to access to the rights freedom. They are exploited and neglected for the not treated as per the within the men. ସେମାନେ ଯଦିଓ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଶରେ ସେମାନେ ପୁରୁଷ ସହିତ ସକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ hence they are able to participate in government process equal citizen of the country. ତଥାପି ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋସେସରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ अंशग्रहण करी मत साब्यस्त करी सेमाने निजर पराकाष्ठा प्रदान करछंती यू सी इन माननीय निर्मला सीतारमण became the finance minister of the central government. You see the first citizen of India, that is your Mananiya Draupadi Murmu became the first woman woman president of India, महिला राष्ट्रपति भारतवर्ष. Any question, please? Any question? Yes, Hello. sir, टिके डाउट ला. हाँ. सर आपण जो टॉपिक्स पढ़ेले सब टॉपिक्स जेम देखि Democracy. है ना. हाँ, डेमोक्रेसी रो इवन टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट सर से जाको तो हम इग्नो बुक रे नाही सर तो माने हमें लिखि परिबो ना बुक को हम फॉलो करिबो. एइटा हैला ही क्वेश्चन मु सेही कथा ही कहूची एइटा हैला ही प्रकृत पाठ सेइटा इग्नो बुक रे ही नाइन टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी अच्छी पॉजिटिव नेगेटिव डेमोक्रेसी मु जोटा नेगेटिव डेमोक्रेसी पॉजिटिव डेमोक्रेसी की एलाबोरेट करिची सेटा ता भीतर सेटा ता भीतर नाही ठीक अछि डेमोक्रेसी रे हां मेरिट डिमेरिट्स सक्सेसफुल रन ऑफ डेमोक्रेसी ये सब नहीं दैट इज कांसेप्ट तम मन रछि आनी कि थोई दबो हमर बही रे तुम बही रे क्रिटिसिज्म अछि कि नो सर सेटा भी नहीं. नो सर दैट इज योर ओन व्यूज हैला योर सजेशन बही रे अछि कि दैट इज योर ओन व्यूज तेणु करी क्वेश्चन टा को टू दी पॉइंट रे जा हे पारिबो टर्म एंड एग्जाम रे टू दी पॉइंट रे मु विभिन्न बही फॉलो करछि विथ इग्नो बुक्स कने इग्नो बुक्स रे गोटे स्पेसिफिक अछि बेसी पॉइंट गोटे नाही तमे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दबो तो गोटे विक्षिप्त भाव रे बुझेइबो टू पुट द वेरियस पॉइंट्स इन योर आंसर बुक गोटे विभिन्न प्रकार पॉइंट गुड़े देले जदि एलाबोरेट करलो बा न करलो से अलगा कथा पॉइंट गुड़े लिखिले यू गेट अ हायर मार्क गोटे भलो मार्क पाइ जोटा कहिलो सेटा आज कहीं कहले एटा तो बहुत दिन पूर्व कहवा कथा ए सब हम संडे रे टॉपिक पढ़िली सर सेति पे हाँ, ग्लोबलाइजेशन और हाँ, लिबर्टी संडे रे देखले बुक्स जो तो तापरे जानले ये कि सब आपण तो टॉपिक गुड़ा हाँ विभिन्न माने ग्लोबलाइजेशन अच्छी एमए क्लास रे किंतु ग्लोबलाइजेशन रो भित्तिभूमि टू वर्तमान पर्यंत सबु तथ्य ता भीतर नाही ता भीतर काहे कि नाही बहुत काहे कि अग्लो नाही तार कारण ता होची एडा होची गोटे कोन करेस्पोंडेंस कोर्स सबु तथ्य ता भीतर नाही न थाए बा न थाई पारे माने पिला अधिक पढ़ी परिबे नाही
तेणुकर जो क्लास गोटे हूँ सब डिटेल्स तुमको दि जाऊँ टू दी पॉइंट माने प्रैक्टिकल नॉलेज ता भीतर जहाँ अच्छी विभिन्न बही रे पढ़े दिया गले तुम्हें यही जो क्लासरूम रे किछि पढ़िल किछि बही रे अच्छी आउ किछि निजर ओन व्यूज आउ किछि अलगा सोर्स रे ताकू थोइल कोडी टर्मेट एग्जाम रे मार्क पाइल यू सी इन योर प्रोजेक्ट पेपर रे जते बेले लेखिल गोटे तादर लास्ट पेज रे लेखुछ कोन रेफरेंस माने एई पॉइंट गुडा मु कोठो आनी छी काहे लेखिल दैट इज रेफरेंस मु एई रेफरेंस को भित्ति करिकिनी ए प्रोजेक्ट लेखि किसी असुविधा नहीं हला आउ कोन एनी क्वेश्चन प्लीज हेलो सर सेम हाँ जिनस सर सेम टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी रे लास्ट हमरो इग्नो बुक रे गोटे पॉइंट अछि कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी सर ता भीतर गोटे क्वेश्चन अछि हाउ कैन द प्रॉपर कंडीशंस ऑफ कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप बी रियलाइज्ड सर सेटा टिके केमती कोन कहि दी थांदे आ गोटे सर ग्लोबल गवर्नेंस भी टर्म अछि बट सर ए क्वेश्चन टा टिके ये होछि क्योंकि नेक्स्ट क्लास रे पढ़ेबा काली तो टाइम पाका पे ग्लोबल गवर्नेंस मु पेइटर पढ़ेलिनी कि भारत वर्ष रे डेमोक्रेसी अछि यूके यूएसए रो किछि कंट्री भी डेमोक्रेसी अछि ग्लोबल डेमोक्रेसी माने भारत वर्ष बाहर गोटे जगतीकरण रे भी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल भाव चलछि बुझेला जोटा कहली मु कहलिनी कि एबे कहलिनी कि सक्सेसफुल ऑफ डेमोक्रेसी रे ए कंट्री मानकरे डेमोक्रेसी ते चलछि ग्लोबल डेमोक्रेसी सर कौन कहले हेलो हेलो हाँ हाँ जो प्रेजेंट परमिता जो पचारे से क्वेश्चन था कि हाउ कैन द प्रॉपर कंडीशंस ऑफ कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप बी रियलाइज्ड हाँ कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी को मु आर क्लास रे टिके भलो किन पढे हला सर तारो तो हम आंसर चैलेंजेस टू डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन टू चैलेंज इंडिया चैलेंज तो डेमोक्रेसी तो कहली हाँ सेटा कंपेयर करके लिखला होबनी सर हाँ हाँ ओके ओके चैलेंजेस ऑफ बाकी सर डेमोक्रेसी ताहले तो मु कहली टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी रे इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इंक्लूड करके ता बाद बुक रे जहाँ जहाँ अछि जेमति कि हाँ हाँ देखिबो डेमोक्रेटिव देखिबो सोशल कॉस्मोपॉलिटन सब कुछ लिखि परिबो देखिबो टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी रे पढ़ितली डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी तापर डायरेक्ट डेमोक्रेसी रे पॉइंट उडा थला रेफरेंडम इनिशिएटिव रिकॉल प्लेबिसाइट हला यस सर तापर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हला एतिक ता कोन यस सर किसी समस्या नहीं से जो कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी टा मु काली पढ़ेबी आ कोन एनी क्वेश्चन प्लीज को ଟିକେ ବିଭିନ୍ନ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ବୁଝିଲେ ହେଲା କି सर जस्टिफिकेशंस फॉर डेमोक्रेसी कहि चंदे के इंट्रिंसिक और କୋଉଟା इंस्ट्रूमेंटल କୋଉଟା କୋଉଟା ହ୍ୟାଲୋ जस्टिफिकेशंस फॉर डेमोक्रेसी जो इंट्रिंसिक एंड इंस्ट्रूमेंटल टा कुहा हेची ହଁ କୁହାହେଇଛି वाइच ହଁ ओके 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 सर ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରିଜ ଅଫ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଅଫ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଯୋଉଟା କି କସ୍ମୋପଲିଟାନ ଡେମୋକ୍ରାସି ତାକୁ କାଲି ପଢେଇବା ଆଉ କଣ ଆଉ ମିନିଟ 2 ମିନିଟ ରହିଲା ଆଉ ଏନିବଡି ଏଲ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁହ କାଲି ସେଇଟାକୁ ପଢେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫେମିନିଜିମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କୁହ सर किछ मटेरियल देखिका आसथिबो ना सेमती बस फेमिनिज्म स्टार्ट करतो मेटेरियल हेलो हाँ हाँ मु पचारली सर किछ माने देखिके आसथिबो कि फेमिनिज्म रो ଫେମିନିଜିମ୍ ମୁଁ ପଢେଇବି ମେଟେରିଆଲଟା ଦେଖ ତମର ତ ବହିରେ ଅଛି ତ ତମର ଯୋଉ ଫେମିନିଜିମ୍ ନାରୀବାଦ ଗୋଟେ ଟପିକ ତାକୁ କ୍ଲାସ କଲେ
दुई तीन टा मिनिमम क्लास जीव लगी फर्स्ट वेव सेकंड वेव थर्ड वेव फोर्थ वेव नारीवादटा कौटी सृष्टि बुझीगला परिवार आगे आरंभ तार सब अच्छी मेरिट डिमेरिट्स कहीं परिवार आरंभ कहीं हो नारी शिक्षित कहीं हो शिक्षित हेले भी यू सी मैंने गोटे वैस अफिसर गोटे तार गोटे बीटेक इंजीनियर्स थी भर गोटे गोटे डिमेरिट्स माने गोटे प्रॉब्लम आसुची ना नहीं Yes, sir. आसुची ना नहीं हाँ ना कह मत Yes, sir. ऐसा सीटा कहीं होची सीटा कहीं होची से नारीटा कहीं स्वामी की एक्सेप्ट कर पारुनी तार कौन भूमिका होची शाशु ता नणंद या पर चाप पकाउछ नारीर प्रकृत शत्रु किए दैट इज द रियल थॉट ऑफ इन प्रेजेंट डे वर्तमान जुग में ये प्रॉब्लमटा कौन नारीर शत्रु किए नारीर शत्रु किए हेलो नारी सर गोटे नारी नारी तो मूल कथा तो सही आ नारीर शत्रु ही ना ता शाशु नणंद तापर गोटे प्रभाव पकाउछ से विषय में आलोचना करवा फेमिनिज्म नारीवाद है ना हाउ एनीबॉडी एल्स क्वेश्चन प्लीज टाइम इज ओवर ओके Yes, sir. Thank you, sir. हेलो थैंक यू नेक्स्ट नमस्कार क्लास में कल देखा ओके आज्ञा Yes, sir. थैंक यू बबीता